हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल आपको समझाने जा रहा हूँ। ये आपका एग्जाम के लिए जितने जरूरी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी होता है। तो ये पहले समझेंगे सर्कल क्या होता है। देखिए, इट इज ए क्लोज्ड कर्व पाथ, all the points on this curve are equidistant from a fixed point. This fixed point is called what? Center, and this fixed distance is called what? Radius. Okay, so today we'll discuss what? Tangent. So दो पार्ट होता है आपका. So ये tangent, another is secant. What is tangent? If a line touches the circle at a point, if a line touch the circle at a point, this line is called what? Tangent. If line passes through the circle, it is called what? Secant. Okay, so two theorem is here in your class 10. One is radius and tangents always perpendicular each other at the point of contact. Another theorem is what? From external point we can draw two tangents, their lengths are equal. So देखिए, first theorem, this is what? Radius and this is tangent. Radius and tangents always perpendicular at the point of contact. So basic concept क्या होता है? You know, perpendicular always shortest. जैसे देखिए, अगर ये लाइन देखिए, इधर आएंगे, उधर आएंगे, उधर भी आएंगे, जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर होता है वो होता है शॉर्टेस्ट. तो कैसे समझाएंगे? देखिए, so this is center, suppose O A, you take 2 or 3 points from this line, that is suppose P Q R. Okay, so join OP, OQ and OR. Okay, if OA is the shortest among PQR, then shortest always perpendicular होता है. तो कैसे देखिए, so जो सर्कल को जहाँ से इंटरसेक्ट करती है इसको नाम भी दीजिए X, Y and Z होता है. See, OX is always less than OP. OX always less than OP. Why? Now part of the line always less than the whole होता है. Part of the line OX always less than OI. So OX is same as OA. So OA is less than OP. Why? Now OX and OA both are radius. सर्कल जितने रेडियस होते हैं सब इक्वल होता है. तो OA शॉर्टेस्ट हो गया. सिमिलरली OZ, OY, सिमिलरली OY less than what? OQ, because part of the line, part जिसे लिखिए, part of the line always less than what? Whole. तो OY is the same as OA radius, so OA also less than OQ. So OA is less than OP, OA is less than OQ. Similarly OA also less than OR, so that OR is the shortest, so shortest always perpendicular होता है. Okay, so this is the first theorem. Second theorem, from external point, suppose this is a circle, from external point we can draw two tangents, their lengths are equal. Tangent कहाँ से होता है? Suppose ये होता है O, suppose AB and AC, यहाँ से A टू लेकर C तक ये होता है tangent, A टू लेकर B तक ये होता है tangent. Their lengths are equal. We have to prove AB equal to AC. How to prove? So see, join OB and OC. So in the last theorem, so radius and tangents always perpendicular. This is also perpendicular. Join OA. So we have to prove. To prove क्या करना है? To prove OAB equal to AC दिखाना है आपको. तो कैसे दिखाएं? Two sides are equal, two angles are equal. That means you have to show that these two triangles are congruent. When two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. How to show that? See, in triangle OBA, in triangle OBA and triangle OCA, what happened? Sir, this angle is 90. OBA equal to OCA equal to what? 90. रीजन लिखना है आपको, रेडियस एंड टेंजेंट्स. रेडियस एंड टेंजेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. Similarly,
ओ बी इक्वल टू ओ सी, सेकेंड कंडीशन ओ बी इक्वल टू ओ सी, वाई रेडियस, ऑलवेज राइट डाउन द व्हाट जो होता है ना कंडीशन लिखना है, देन ओ ए कॉमन, ओ ए इक्वल टू ए ओ कॉमन, so now so right angle hypotenuse and one side by RHS these two triangles are congruent, so triangle OBA is congruent to triangle OCA by right angle hypotenuse and one side. So when two triangles are congruent their corresponding parts are equal, so that AB, how do you know corresponding? See this angle 90, this angle 90. So देखिए ये तो जो थर्ड ये जो ना दिस एंगल इक्वल टू दिस, इट्स फेसिंग साइड ऑलवेज इक्वल, जैसे दिस इक्वल टू दिस, ओके दिस इज द कॉमन साइड, रिमेनिंग साइड ऑल्सो इक्वल, सो ए बी इक्वल टू ए सी बाय CPCT. सो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स देयर लेंथ्स आर इक्वल. सो नेक्स्ट क्या होता है देखिए, और एक जो कंडीशन, दिस इज ए सर्कल, दिस इज टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, जान कीजिए दिस इज ओ ए बी एंड दिस सपोज सी. सो जो लाइन ज्वाइनिंग होता है सेंटर टू एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दिस इज बाइसेक्ट करती है, सेम थिंग कॉन्ग्रुएंस, जैसे 90 रेडियस एंड दिस इज द कॉमन साइड, सो राइट एंगल बाय RHS these two triangles are congruent, so this equal to this. so याद रखो फ्रॉम सेंटर टू एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स जो लाइन ज्वाइन करेंगे, ये लाइन ये जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. ये होता है दो थ्योरम, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे. सो देखिए एक क्वेश्चन सर्कल का दिया है, सो टी पी द टेंजेंट्स एंड ओ इज द सेंटर गिवन अच्छी, सो टी पी क्यू द एंगल इज गिवन व्हाट 110, TPQ is given 110, then find POQ. ये कैसे निकालेंगे देखिए. So this radius and tangents, so OPT this is 90 degree, radius and tangents always perpendicular, so OPT is given 90, but total angle जैसे दिए है ना TPQ कैसे मिलता है सर, this angle plus this angle OPQ प्लस OPT, जैसे TPQ एंगल होता है इक्वल टू 110, सर OPQ प्लस OPT इज गिवन 90 इक्वल टू 110, देन OPQ इक्वल टू व्हाट 110 माइनस 90, सर 20 डिग्री होता है, तो दिस एंगल इज 20. So as OP equal to OQ radius, so in a triangle if two sides are equal then angle opposite to them also equal, so this is also 20, so you need this angle. So according to the triangle law sum of the three angle equal to 180, so 20 plus this is also 20 plus your POQ equal to 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए, सो 20 प्लस 40, सो POQ क्या होता है 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 दैट इक्वल टू 140, गॉट इट. सो POQ इक्वल 140. सो सिमिलरली अनदर क्वेश्चन इज गिवन हियर, it is given XY and X dash Y dash are two parallel tangents. Another tangent is what AB which touch the circle at the point C. Okay, given what are given, XY and X dash Y dash are two parallel tangents, and this is the diameter. So this is 90, this is 90. What you have to prove, sir? AOB, prove that AOB equal to 90 degree. कैसे प्रूव करेंगे देखिए, this is also a tangent, XY X dash Y dash, two parallel tangents, AB is also another tangent which touch the circle at the C. We have to prove AOB 90, इसे 90 दिखाना चाहिए आपको. So अभी क्या करना है सर, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन OC tangent center to tangent, join this line. Okay, so what happen sir, in between these two triangle, जिसे नाम दीजिए P. Okay, so in triangle PAO and COA, in between these two triangle what happen, PAO लिख दीजिए,
PAO and CAO and triangle CAO. What happened in between these two triangle? Sir, these two sides are equal. AP equal to AC. AP equal to AC. Why? Now tangents drawn from an external point. Tangents drawn from external points are equal in length. Similarly, sir, this equal to this. Why? Radius. OP equal to OC. Radius. And third in is what? OA is common. So by side, these two triangles are congruent. When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. That means, so this angle equal to this angle. Suppose this is x, this is also x by CPCT. Same concept here. These two triangles also congruent. How? Now sir, this side equal to this side radius. This side equal to this side. Why? The tangents drawn from external points are equal length, and this is the common side. So by side, these two triangles are congruent. So by CPCT, this angle equal to this angle. This is y, this is also y. See, as these these are parallel tangents, so this angle equal to this. Sum of the co-interior angle always 180 होता है. So this sum of these two are what? 2x, and sum of these two are 2y equal to 180. Co-interior angle. Sum is always 180. So if we take 2 as common, so x plus y equal to 180. 2 उधर जाएंगे divide 90. तो x plus हो गया 9. X plus y is 90. X is this one. See, this is x and this is what? Y. See, these two sum is 90. According to the triangle law, in triangle AOB, what happened? Now this plus this equal to 180. Ax plus y plus AOB equal to क्या होता है सर? 180 angle sum property. तो x plus y is given here 90. तो 90 plus angle AOB equal to 180. Then your AOB क्या होता है? 180 minus 90, 90. हो गया ना प्रूफ? तो ये होता है सारी प्रूफ. छोटा चैप्टर है, इससे ज़्यादा नहीं, बट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. दो थ्योरम. एक थ्योरम होता है रेडियस एंड टेंजेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड सेकंड थ्योरम इज व्हाट? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, देयर लेंथ्स आर इक्वल. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको.